Assalamualaikum students. Hope you all are fine. Let's start from bio first year. Chapter number 2, exercise, short question answers solve करेंगे. So let's start. हमारे पास है question number 11 which is describe classification of carbohydrates. बच्चों हम ये पढ़ चुके हैं पीछे लेक्चर में कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासीफाई किया था 3 ग्रुप्स में, monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. The monosaccharides क्या होते हैं? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, और जो ओलिगोसैक्राइड्स होते हैं आर लेस कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और विच यील्ड 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis, and polysaccharides are complex carbohydrates which yield at least 10 or more monosaccharide units upon hydrolysis. Next is describe classification of monosaccharides के monosaccharides की classification. बच्चों हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि monosaccharides को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी, एल्डोजिस एंड कीटोजिस के अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो एल्डोज, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो कीटोजिस. उसके अलावा हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी. अगर 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो ट्रायोजिस, 4 हैं तो टेट्रोजिस, 5 कार्बन प्रेजेंट हैं तो पेंटोजिस, 6 प्रेजेंट हैं तो हेक्सोजिस, 7 प्रेजेंट हैं तो हेप्टोजिस. ठीक है, फिर हमने एक टेबल भी पढ़ा था जिसमें हमने इनके एग्जांपल्स भी पढ़ी थी ट्रायोजिस की ग्लिसरल्डिहाइड, और इसी तरह टेट्रोजिस की इरिथ्रोज राइबोज, हेक्सोजिस की ग्लूकोज, हेप्टोजिस की ग्लूको हेप्टोज. ठीक है, तो वो हम वहां से एग्जांपल भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब कन्वर्जन ऑफ ओपन चेन ऑफ राइबोज इनटू रिंग चेन. कि जो ओपन चेन राइबोज है, राइबोज क्या है बच्चों? जैसे ग्लूकोज राइबोज है 5 कार्बन शुगर. ठीक है, तो जो राइबोज की कन्वर्जन है फ्रॉम ओपन चेन टू रिंग चेन उसको एक्सप्लेन करें. ठीक है, आंसर इज let us understand it by taking ribose as an example. Ribose is an aldopentose with molecular formula C5H10O5. It can exist in open chain structure in dried form, but it exists in furanose ring in aqueous medium. When it is dissolved in water, the oxygen atom from aldehyde group reacts with penultimate carbon, second last carbon, carbon 4 in case of ribose. In this way, oxygen atom forms a link between carbon and carbon of carboxyl group and carbon number 4, while the OH group of carbon 4 is shifted to carbon number 1. After this modification, ring structure of ribose is formed. The ring structure demonstrated by Emil Fischer is called Fischer projection, a two-dimensional representation of ring structure, while that represented by an English chemist Norman Haworth is called as Haworth projection, a three-dimensional representation of ring structure. Next question is draw and label ring form of alpha and beta glucose. ये बच्चों हमने पीछे पढ़ा था आइसोमरिज्म में अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज. तो इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि जो अल्फा ग्लूकोज होती है उसके कार्बन नंबर 1 पे OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है
वो डाउनवर्ड प्रेजेंट होता है, जबकि बीटा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप अपवर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपने सिंपली उनका क्या करना है, रिंग जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर देना है अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज justify that laboratory manufactured sweeteners are left-handed sugars and cannot be metabolized by right-handed enzymes. Answer is laboratory manufactured sugars such as tagatose, sucralose are left-handed forms L sugars. On the other hand, the naturally occurring sugars in bodies are the sugars. Proteins and cell receptors are designed to react only with particular enantiomers. For example, the enzymes in your stomach can digest only right-handed sugars. Likewise, left-handed sugars cannot be metabolized by right-handed enzymes. Just as the glove fits on the proper hand, a right-handed enzyme cannot fit on or react with a left-handed substrate. The substrate must be fit on the proper active site of the enzyme. So far, the left-handed substrate sweetener, the enzyme must be left-handed. Next question is illustrate the formation and breakage of sucrose, maltose, lactose. First of all, we'll discuss formation and breakage of sucrose. Sucrose formed by condensation of glucose and fructose. In this reaction, the OH group at carbon 1 of glucose reacts with OH group at carbon 2 of fructose, liberating a water molecule, and a linkage is formed between C1 of glucose and C2 of fructose known as alpha 1 to glycosidic linkage. Next is maltose. The maltose is formed by condensation of alpha 2 alpha glucoses. In this reaction, the OH group at carbon 1 of 1 glucose reacts with the OH group at carbon 4 of other glucose, liberating a water molecule, and a linkage is formed between carbon 1 of 1 glucose and carbon 4 of other glucose, known as alpha 1,4 glycosidic linkage. Next is lactose. The lactose is formed by the condensation of beta-galactose and beta-glucose. In this reaction, the OH group at carbon number 1 of galactose reacts with OH group at carbon number 4 of glucose, liberating a water molecule, and a linkage is formed between carbon number 1 of galactose and carbon number 4 of glucose, known as beta 1,4 glycosidic linkage. Next question is draw structural formula of amino acid. हम बच्चों पढ़ चुके हैं काफ़ी दफ़ा। अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, सेंटर में एक कार्बन होता है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके अलावा इसके साथ 4 ग्रुप्स अटैच होते हैं। फर्स्ट जो कार्बन के साथ ग्रुप अटैच होता है वो होता है अमाइनो ग्रुप, NH2 अटैच होता है। एक साइड पे कार्बन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH अटैच होता है। एक तरफ H हाइड्रोजन अटैच होता है और चौथी तरफ R यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सेंसेस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। Answer is the peptide bond is synthesized when carboxyl group of one amino acid reacts with amino group of other amino acid molecule, causing the release of a molecule of water. Hence, the process is a dehydration synthesis reaction, also known as a condensation reaction, and usually occurs between amino acids.
Next question is describe four types of structures of proteins. ये बच्चों हम पीछे पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशंस इन प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्ट्रक्चर. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है वो सिंपली क्या है, अ लीनियर पॉलीपेप्टाइड विद अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स is called primary structure. It is shown by all proteins at time of synthesis. After synthesis, a protein does not remain in primary structure but can be changed into some other structural conformations. Secondary structure. A alpha helix or flattened sheet like structure which are established by hydrogen bonding between opposite charge bearing groups of different amino acid is called secondary structure. Next is tertiary structure. In some proteins, the linear polypeptide is changed into alpha helix, then the helix fold again and again by ionic bonds and disulfide bridges to form a globular structure called tertiary structure. Next is quaternary structure. Some proteins exist in very complex structure in which more than one globule is attached together by hydrophobic interaction. Such structures are called quaternary structures. Next question is describe globular protein and fibrous protein. ये भी बच्चों हम पढ़ चुके हैं पीछे. These are two types of proteins, globular and fibrous. Fibrous proteins क्या आती हैं? Are thread like, fiber like, and globular proteins are spherical. So globular proteins. These proteins have spherical or globule-like shape. They exist in tertiary or quaternary structure during function. These proteins are soluble in aqueous medium, inelastic in nature, and can be crystallized. For examples of globular proteins are enzymes, hormones, antibodies, channel proteins. Next are fibrous proteins. These proteins have fiber or filament-like shape. They exist in primary and secondary structure during function. These proteins are insoluble in aqueous solution, elastic in nature, and cannot be crystallized. Examples of fibrous proteins are collagen, fibrinogen, actin, myosin, and keratin. सो स्टूडेंट्स हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं. होपफुली आपको समझ आ गए होंगे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.